Yo guys, I'm back again with another stream of Death Stranding 2 on the beach. Hope you guys doing well. Let's continue our story. ये क्या था कल का मिशन? टेक ऑन ए मैन ऑर्डर एट ब्राउजर्स टर्मिनल. इसको सेव कर लेते हैं. कल सेव करना भूल गया था. I'm so relieved that Tamara was unharmed. She must have been terribly nervous, trying to brave an unfamiliar world. But she's safe now, thanks to you, Sam. And now we have to show the girl that we're equipped to take care of her. That the DHV Magellan is a place she shouldn't be afraid to return to. A place that she can call home. I was surprised by how effectively Tamara was able to fight those mechs. The way she took advantage of the tar and used her unique abilities against them, it demonstrated impressive improvisational skills. But her capacity to rapidly accelerate the age of any material or enemy she comes into contact with. Oh, I can't help but be a little jealous. But there are other ways I can contribute to your work, and I hope to continue doing so. गरम गरम पानी से नहाना चाहिए. गाना ये या ना ये गाना चाहिए. मतलब ये थोड़े कीड़े खा लेते हैं पेट पूजा करके. चलो बुक्स वगैरह पढ़ते हैं. देखते क्या है बुक्स में. इसका क्या है नया प्रवचन. The gathering of storytellers that North City spawned Classes. Mary Shelley's Frankenstein gave rise to yet another legendary creature of horror fiction. I speak, of course, of the vampire. A physician named Polidori was also in attendance that evening, and he later unveiled his creation in a new novel. As I may have mentioned before, the summer of that year was unusually cold. In Europe alone, 200,000 people are said to have perished as a result. Could it be that a widespread fear that the world might be coming to an end served as inspiration for two classic monsters? I find it a compelling theory. अच्छी इंफॉर्मेशन थी. कलो चावरा के हेलो 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 हेलो. एक मिनट माइक थोड़ा ऐसे कुछ कैप्चर नहीं कर पा रहा थोड़ा बहुत ऐसे. हेलो 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 माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3 1 2 3. हेलो हेलो हेलो.
स्कैन वगैरह तो ठीक है। हेलो, 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 हेलो। कोई शायद ठीक हो गया। थोड़ा बहुत वो बीच में कैप्चर से छोड़ रहा था। एक मिनट में अपना यार सुन के देख लो। अभी ठीक है थोड़ा बहुत ऐसा। नहीं, कभी कभार ये ओपीएस अपने आप ऐसा हो जैसे हो जाता है सेटिंग्स वगैरह। लेट्स हेड आउट। विजन आया नया कुछ अभी और पैसे बच्चे को। Dad! Mom! This way. भाई क्या सीन है भाई, बारिश हो रही है। मेरे यहाँ भी बारिश हो रही है घर के बाद। के टर्मिनल पे चलते हैं। कल तो ट्रक भी मैं वहां पे छोड़ के आया ना, उसको ढूंढते ढूंढने के चक्कर में वहां पे ट्रक भी हम वहां पे छोड़ के। टुमारो भाग गई थी कल। टुमारो टुमारो भाग गई थी। लेडर don't have any tools। सुसु करना कहीं ऐसे इस जगह पे सुसु करते। किसी को पता ना चले। हाँ 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 हाँ। हाँ मजा आ गया। मस्त हल्का हो गया है यार। कल उसको ढूंढने के चक्कर में सुसु ही नहीं किया मैं। अच्छा ये होलोग्राम में होता है ना, बार बार मेरा वो कंफ्यूज हो जाता है इसके अंदर जाना कैसे। क्या है इसका ऑर्डर? मेन ऑर्डर ब्रेकेबल है।
ब्रेकेबल कार्गो डिलीवर्ड और मैग्नेट टू हार्टमैन स्लैब। ओके, अरे हार्टमैन से मिलना, इसको हार्टमैन पहले पार्ट में। ऑपरेट करने लायक ये हो सकता है। लेट्स गो। Order accepted. Thank you. हार्टमैन से मिलने का प्लान आ गया बस। हार्टमैन की जगह कहाँ पे? ये वैली होके भी जा सकते हैं। ठीक है, सोर जैसा। या फिर ये जिप लाइन यूज करके भी। ऐसे घूम के जाने के बदले जिप लाइन यूज करके ही जाते। Come and visit me again soon. मैं ट्रक कहाँ था? हाँ, ट्रक ढूंढना पड़ेगा। ट्रक कहाँ पे रखा था? हाँ, पिकअप लोडर। यहाँ पर भी ये जो से Commencing route. Create delivery route finalized. Commencing route creation. Delivery route finalized. लेट्स गो।
हो रहा सामने ओवरलोड। ये तो अच्छा है, स्केलेटन की वजह से मस्त ऐसे भाग पा रहे। स्टेमिना अच्छा है इसका। अच्छा बीटी ये रही है। बारिश चालू हो गई। एक मिनट, पहले तो ये सामान अंदर रख देते। अबे इसकी खटिया खड़ी कर। चमकादड़ है कहीं? That. Those flying things over there. ओ भाई ये तो डैमेज कर रहे हैं। खतरनाक हो गया भाई सीन। लोचा हो गया। ये इसकी माँ का भी गिरने वाला। खतरनाक सीन हो गया ये। मुझे लगा कोई पंछी ऐसे चमका दौड़ दे, माबिन कर दी। काफी सारा सामान था इसलिए लेने आए। माँ बहन कर दी थी भाई चमका दौड़ ने।
यहाँ से तो 8 मैन वहाँ पे अभी डाउजर पे जाने का मतलब नहीं है। तो डाउजर से ही है सर। Commencing route creation. Delivery route. क्रॉस होके जाते हैं। भाई खतरनाक सीन था भाई, फट के हाथ में आ गई थी मेरी, मुझे लगा खत्म ही है ये। इतने सारे चमगादड़ यार एकदम, मैं ऐसे अंधाधुंध मारने लगा। चमकी हाँ फंस गई। भाई इसमें तो आराम से यहाँ पे डाउजर तक पहुंच गए, पता भी नहीं चला इसे कब डिस्टेंस से कट हो गई। तो चलने में तो कितना टाइम लगता है पहुंचने में वहाँ बताओ, ये ट्रक लेके पता भी नहीं चला कब यहाँ पे पहुंच गए। इतना टाइम है, एकदम बच गए मैं। बाकी ये ट्रक तक जाने के लिए कितना टाइम लगा वहां से? 15-20 मिनट जैसा टाइम लगा। और ये ट्रक में तो यहाँ पर कब पहुंच गया पता भी नहीं चला। तो ये क्या करे? ये नदी से होते हुए भी जा सकते हैं। देखते हैं, नए रूट बनाएंगे अब। ज्यादा कोई नहीं, 1000 मीटर ही। नेचर को बहुत ही अच्छा दर्शाया है गेम में। अच्छा, इसके अंदर से पानी फूट रहा है। क्या लगता है ऊपर चढ़ पाएगा? ढलान चढ़ गई। सेक्सी ऑफ रोडर। थोड़ा सा सब ऐसे आड़ा टेढ़ा हुआ।
खत्म। Gotcha. सही है, बातों बातों में पहुंच भी गए। देखो सामने ही तो है वो खंडर में, आर्टमैन के लिए पता भी नहीं चला कब पहुंच गए। You're mine. टिक्की कैनन भाई जो भी वो उठा ही रहे। ये देखो बातों बातों में कब डे से डिस्टेंस कट हो गया पता भी नहीं चला। ऐसी जगह पे इसने अपनी लैब बनाई। अच्छा नीचे ऊपर ऐसे बनाया है Weapons detected. Be advised that ताकि किसी को ऐसे डाउट। inside facility grounds. Access the delivery terminal to process your orders. चलो उधर टावर मैग्नेट है। Thank you for your service. Proceeding to order confirmation. The condition of this cargo is above average. Your assistance is a... Please use your qubit to initiate a network connection. इजी बिजी है यहाँ पे सब कुछ। वहाँ पे चल के मैं ट्रक भी ले आया, चमका दौड़े उसे बच भी गया से, और रिटर्न भी हो गया। चल के टाइम लगा था वरना तो अब तक तो ये मिशन हो भी गया और ट्रक लेने जाना पड़ा। इसमें सब सामान वगैरह भी था। स्टैंड एस्टेब्लिश। एक्स्ट्रा बैटरी लेवल 1 जंप रैंप। सेफ हाउस ओके, ये बना सकते कहीं पे भी सेफ हाउस। फॉर्मवेयर अपडेट हो गया। Now displaying your current porter grade. इजी रूट था इसमें इसका, वो इतना हार्ड नहीं था पहुंचने के लिए। मुझे लगा ऐसे घूम फिर के जाना पड़ेगा। Connection to chiral network established. Condition assessed as good. Thank you for your service. इजी बिजी कब ब्राउजर के पास से निकल के पहुंच गए This is the President. पता भी नहीं चला। Once again, you've done it. The northwestern part of the Australian continent has been successfully connected to the chiral network. As a result, the probability of a new plate gate manifesting on this continent has significantly increased. As for what comes next, I believe a drawbridge ally is stationed at this facility. By strengthening your bonds, I have no doubt you will be able to accomplish even greater feats. So don't let me keep you. Your friend is waiting inside. Facility doors have been unlocked. Please use the entrance to proceed into the facility. Order completed. Well done. पता है ये स्क्रीन थी मैं ऐसे होलोग्राम में, पर ऐसे दिखने में ऐसा था कि Drawbridge credentials verified. कोई दीवार है। क्या इल्यूजन बनाया भाई इसने आर्ट में, क्या क्लब जैसा बनाएंगे लाइटिंग वाइटिंग। Please proceed inside. ये क्या है भाई अभी? Administering shock. Stand clear. ये कुछ नया है कांड Reach करेगा reference इसमें। frame confirmed. UB coordinates are L 47.37, B plus 6.32.
इसने ग्लासेस भी और ना आर्ट वाले में You're looking well, Sam. Thank you for coming. Oh. It's been a while. Ticker still holding up? Thanks to this support unit, I can flatline what the hell anytime, anywhere without worry. किसी भी एंगल में से Doesn't like either. I can sleep क्या गैजेट बनाए हुए हैं? वाह standing up. खड़े खड़े भी सो सकते टेक्नोलॉजी है I am. They're a large part of the reason I came to this place. You okay? इसको वापस हार्ट अटैक आया ग्लासेस खतरनाक है I've been rather Hardship. unkind to my heart. You might say I'm on the verge of heartbreak. Still, it's a small price to pay for mapping the beach. And now that my work here is complete, I can accompany you all on your journey. Oh, we undertook the beach mapping program to help determine the most efficient strategy for linking up Australia. While near death, I traversed the beach and provided location data to APAS, which it used to build a database. Oh, APAS was my partner in this, you see. I also collected water samples from the various beaches I visited, which I duly deposited in the form of my own tears. Apparently, the water somehow circulates between them and the world of the living. The samples were required to study the phenomenon. Huh. This is the first I've heard of it. I didn't think this was your field. Oh, it isn't. Far from it. I collected the samples for the benefit of a collaborator. In the process, I placed a greater strain on my heart. But it's nothing to worry about. Like it or not, they all wear out sooner or later. You sure you're okay? ये क्या All good in there? अंदर कौन है लेबोरेटरी खोल रखी है कौन था Is that all you're सीक्रेट लैब जैसा कुछ बना है Yes. Everything I need is already stored on the DHV Magellan. This here is my insurance. Well then, shall we go to the DHV Magellan? लाइट्स पे लाइट मिलता है वो सब वैसे होलोग्राम ही वहाँ पे वो खिड़की ये सब एआई पे सब कुछ वो ऐसा है पूरा ऐसा बना रखा है इसको रिपेयर करते हैं ताकि बैटरी भी चार्ज हो जाए
which is important. Nice repair job. She's practically sparkling. वहाँ पर बैंडिट्स ने भी हमला किया था तब से ऐसे लोकल पोर्ट में से। अच्छा ये तो यहीं पे है। Disengaging weapons restrictions. Ah, Sam. You're the last to arrive. But now we're all here. Let's get to it. Recently, I received a number of strange mails that were apparently sent to me by none other than myself. And Fragile has been receiving similar communications too. Isn't that right? Yeah, I got a few about Lou's records. It goes without saying, I did not, in fact, send them. It's all very distressing and gave me palpitations. An especially concerning mail reached me not long ago. Attached were some highly sensitive UCA documents on BBs and chiral communications technology, including classified records of the BBs who were sacrificed to build the foundation of the chiral network. These extraordinary children were the catalyst required for the network to route data through the beach. They served as a bridge between the beach and our world, hence the Bridge Baby moniker. They were originally intended for the sole purpose of sustaining the chiral network. I'd like to discuss the implications of these records in my possession, but before that, I can tell you how Bridge Babies were developed in more detail, if you wish. R&D commenced shortly after the Death Stranding was first observed. The inciting incident having occurred during the performance of a cesarean section to save the child of a brain-dead mother. But perhaps the rest should be explained by someone who remembers the period. If you're willing to indulge me. I can't speak with any authority, but if you insist. When the obstetrician touched the fetus during the procedure, it's said they glimpsed the beach. Subsequent research revealed that the unborn children and still mothers possessed a special connection to the place. While communications utilizing the beach had been theorized, the framework was incomplete. These children proved to be the missing link. Afterwards, development of the chiral network began in earnest, or so I'm told. Wait, I have a question. By all means. What about when I was putting Mexico on the grid? Or my work in Australia? Have I been condemning kids this whole time? Worry not, Sam. The new Cupid model does not require a human catalyst. You can be assured of that. Bridget was president when this all began, and she wouldn't permit women to be deliberately rendered brain-dead in order to produce BBs. But the Bridges researchers were not deterred, and they pressed on with their plan in spite of the president's misgivings. To secure test subjects, it seems Bridges smuggled pregnant women into the country from Mexico, among other places. Consequently, they were able to produce the BBs needed to make the chiral network a reality. And 4 years ago, the first Bridges expedition embarked on their journey. This is what I received from the sacrificial BBs. Including backups, a total of 10 units were prepped for integration, but only 9 were used to lay the foundations of the North American network.
I attempted to ascertain the whereabouts of the 10th, to no avail. But as drawbridge, we should have a higher security clearance than me personally. Just to be prudent, would you mind running a search? As Deadman determined, there was another BB-28 that existed before Lu, which was decommissioned. Fragile later discovered that, 4 years ago, Lu was assigned BB-28 serial number, and for reasons unknown, placed into storage. Now, the first expedition also set off 4 years ago, and they could surely have made use of another functional BB unit, yet again, for reasons unknown, Lu remained in storage. So did they have other plans for Lu? Was Lu deemed unsuitable for sacrifice? Or was Lu excluded from the mission for some other reason? Like what? Cardiac arrest imminent. 30 seconds remaining. Not finding anything here. All the official records claim BB-28 was decommissioned. That's it. There's also nothing to suggest a connection between the missing BB and Lu. Still, we know for a fact that they played a part in the first BB experiments. So we have to ask the question, did Lu play one too? 3, 2, 1. ये खतरनाक है भाई इसका पकड़ के लाइक दे दी बेबी मिसिंग बेबी को एपिसोड 7 पार्ट पहले जाता है संडास Let's read the book now. Apparently, Darwin always had a strong interest in geology.
He was fascinated by the way continents and landforms change, leading to the creation of new habitats for organisms. This led him to surmise that organisms adapted to their new environments in order to thrive. And that logic eventually became the basis of his theory of evolution. The world around us continues to change, even now. The continents are in flux due to the shifting tar currents and the emergence of plate gates. Is it possible these changes might also spur life to develop and adapt in unforeseen ways? भूकंप आ गया भूकंप कस्टमाइज लुक में क्या है अच्छा हार्टमैन के रेडियो ग्लासेस इसमें क्या है बैक पैक में एक्स्ट्रा बैटरी Let's go check on loop. Hartman's condition is cause for concern. There's no sugarcoating the tremendous strain he's putting on his body. His is undeniably one of the hardest 21-minute syndromes to live with. The regular disruption to his circulatory system and the flow of blood is damaging all of his organs. And let's not forget that the heart itself has a great many pain receptors. A part of me wishes I could swap places with him. Not that my body could ever serve as a suitable substitute for his. Now let's head to surface. देखते क्या है नया विजन What kind of cargo? I have to smuggle them in. Now, who was that? इस तो कार्गो की बात चल रही इसके अंदर जो कचरा ऐसे पड़ा है ना वो पे ले ले स्टोरेज में डालना
Sam, the next major site to be linked to the chiral network is in the eastern reaches of the continent, East Fort Knott. Our original plan would have had us route a connection through North Fort Knott, allowing for a simple and direct trip. Unfortunately, that city was completely obliterated by a void-out. As a result, we have had to devise a new approach, utilizing a series of connections between preppers in the region. Easier said than done, of course. Some of these preppers are currently refusing to join the network. But according to APAS's latest simulations, enlisting the cooperation of the pizza chef should enable us to win over these holdouts. Your first objective is therefore to bring the pizza chef online. And it just so happens that the cargo he's requested is being stored at this very facility. It's been designated a chilled delivery due to its sensitivity to heat, so you should transport it at night or in the rain. Or perhaps take advantage of a pickup off-roader's covered cargo shelf, which should ensure it doesn't get exposed to direct sunlight. Undertake the main order on this delivery terminal when you're ready. पिज्जा शेफ को देना है। Commencing route creation. Delivery route finalized. This cargo has been designated for chilled delivery. पाव वाले के पास है ना। Order accepted. Thank you. इसकी माँ का क्या माउंटेन बताए। Sam, I don't recognize that device over there. Proceed with caution. Bandit से Sam, something appears to be approaching us. क्या माइंड जैसा कुछ है। Exploding! Is it some sort of homing landmine? Sam, we're in serious danger here. लैंड माइन से जाना कहाँ पे। इससे यार थोड़े न जाने देंगे इनको। लैंड माइन्स लगा रखे। Oh boy, that must hurt. Crazy headshot.
मरा कि नहीं? ओके, अलार्म बंद हो गया, मतलब एरिया क्लियर हो गया। न्यूट्रलाइज ऐसा कुछ लिखा हुआ तो नहीं है? सॉरी गाइस। और एनिमी बेस न्यूट्रलाइज अभी क्लियर हुआ। मेटल्स वगैरह हो तो ले लेते। पूरा ऐसे खून हो गया। वहां पे माइन भी तो फटे थे इसके नीचे, फट के हाथ में आ गए थे ऑलमोस्ट। गलती से पैर पड़ गया माइन के ऊपर, माइन फक होते होते रहे। मेटल्स का मेटल्स थे। रिसोर्सेस कार्गो पे पड़ रिसोर्सेस चाहिए। वन मैन आर्मी हटिया खड़ी कर दी सबकी। Just a moment, guys.
हम्म हेलो 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 अभी ठीक है माइक का मेरे को देखना पड़ेगा अप डाउन ऐसे हो रहा है देखा सही में यार मस्त है इसमें एनवायरनमेंट वॉल्यूमेट्रिक क्वालिटी देखो मस्त फॉरेस्ट वगैरह ले रखा ये देखो इसमें ऐसे ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए ऐसे फील वहाँ पे ऐसे ही ना ये सब माउंटेन्स ये जगह का नाम भी मेरे को पता था भूल गया अभी मस्त नेचर बताया इस ऑर्डर कहाँ देना मस्त बताया नहीं माउंटेन्स वगैरह मेरे लिमिट के ऊपर जा रहा है पता नहीं आज क्या हो गया माइक को माइक में दिक्कत आ गई है तो ओबीएस हेलो 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 मीटर यूज करना पड़ेगा हेलो 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 अभी के लिए तो ठीक है बाद में देखना पड़ेगा इसका सेटिंग The pizza ship. Security measures lifted. Weapons detected. Be advised that usage. Welcome and thank you for coming. I'll inspect your cargo. Excellent work. This cargo is in perfect condition. बीच में वो थोड़ा डैमेज हुआ था वहाँ पे पेड़ से टकरा गया था I knew you would arrive soon. Please, connect me to this network of yours.
New strand established. Let's go. Pizza chef. ये भी Japanese है. Now displaying your current porter grade. Thank you. This technology is remarkable. I expect I'll receive plenty of new business. And speak of the devil, a new इस जगह पे पुराने चावल दिख रहे. I look forward to seeing you again soon, Sam. Excellent work, Sam. You made a big difference today. According to APAS's analysis, pizza-hungry individuals in the area could prove instrumental in the further expansion of the Cairo network. Anyway, let's press on to the next site awaiting you and your Cupid, shall we? It bears mentioning that the denizen located there has a reputation as a very cautious individual. Take care not to give them cause to doubt your intentions. Go ahead and pick up your new main order from the delivery terminal on site, so we can get underway. Order completed. Well done. This is an express order. The faster you can deliver the car, the better your evolution does in private automotive. Okay. पहले तो ये मैं शावर वगैरह ले लेता हूँ, इसके बाद ऑर्डर लूँगा. पूरा ऐसे भरा पड़ा है फोन से लथपथ, इससे थोड़ी ना जाएगी. ये चोमटी है ऐसे हालत में. बिना नहाए ऐसे हो जाता है. इसमें नया ऐसा ऑप्शन देना चाहिए था कि पहले ही कुछ शावर वगैरह ले सके, सिर्फ शावर ले सके, सिर्फ सोना है, इसको रेस्ट करना है, कोई भी ऐसे इंडिविजुअल एक्टिविटी ऐसा ऑप्शन देना चाहिए. I see that the armed survivalists have gotten their hands on a new assortment of weapons. And our own arsenal has since been expanded, courtesy of the pizza chef. People seem less and less inclined to give others the benefit of the doubt these days. I fear it's going to continue to get harder to earn the trust of strangers in the future. वो कल का एप्पल अभी भी पड़ा है, ग्रीन एप्पल. It should be noted that the monster's name is not Frankenstein, nor was it ever given a proper name.
Frankenstein is the name of its creator and the story's protagonist, Victor Frankenstein. Through its many movie adaptations, the image of the disturbing and unstable patchwork creature has grown ever more vivid. And in the process, the misconception that it was called Frankenstein was born. In the original novel, however, it was an intelligent, human-like being that craved acceptance. A clever, gentle giant cobbled together from others, not unlike our dead man, don't you think? And while he doesn't appear in Shelley's original work, in several movies, Frankenstein is joined by a rather memorable assistant named Igor. Igor and Victor. Now, where have I heard those two names before? भी चलते डिलीवरी का मस्त फ्रेश हो गई मस्त हल्का हो गई मुझे तो वो फॉरेस्ट घूमने का मन कर रहा है क्या करे ड्यूटी कम्स फर्स्ट पाइपिंग हॉट पिज़्ज़ा Sorry guys. ये डिलीवरी ऐसे ही पिज़्ज़ा देने के लिए इसलिए मैंने वहाँ पर रेस्ट कर ली क्योंकि अगर बीच में That cargo's marked keep flat, Sam. That means you mustn't transport it vertically. Reorganize your other cargo to create a level surface, or consider using a floating carrier for this delivery. अगर ऐसे डिलीवरी के बीच में कुछ टाइम वेस्ट करता मैं ऑर्डर लेके फिर ये रेस्ट करने जाता तो फिर पिज़्ज़ा ठंडा हो जाता इनको मार दिए तो वापस नहीं आएंगे ना मैं यहाँ से क्यों जा रहा हूँ रोटी नहीं चेक कर रहा हूँ ठीक से डेटा साइंटिस्ट को पिज़्ज़ा देना ठीक है सीक्रेट पिज़्ज़ा सॉस डेटा साइंटिस्ट अच्छा हुआ क्लोज कार्गो ध्यान रखना पड़ेगा भाई यहाँ पे कभी ऐसे भूकंप होता है चीज़ें हम पर गिर सकती ये भी डेटा साइंटिस्ट का ही वहीं पे जा रहे हैं तो दे देगा इसको यहाँ पे कैंगरू भी घूम रहे हाँ भाई मेरा कैंगरू का बच्चा
ये चूहे जैसा लग रहा है। कि यहाँ से बीच से जा सकते हैं, ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें अर्थक्वेक आया तो कितना रियलिस्टिक बटे ये बनाए ये सब। फॉरेस्ट लाइफ कितनी मस्त बताई इन लोगों ने। डेवलपर की मेहनत तो Sam, that is a veritable herd of chiral creatures. Far more than we're equipped to handle. We should यहाँ पर भी ये स्पाइडर घूम रहे हैं। still can. क्या बनाया है भाई गेम, मतलब छोटी से छोटी डिटेल दे रखी है ऐसे। ही देखो चक्कर वगैरह ऐसे। मन तो करे ऐसे पैदल पूरी जगह घूमूं मैं। Just a bit further now. वॉल्यूमेट्रिक फोक कितना सेक्सी दे रहा है। पहुंच भी गए बातों बातों, पता भी नहीं चला। Security measures lifted. Weapons detected. Be advised that usage is restricted inside facility grounds. Access the delivery terminal to process your orders and requests. अभी ये कौन है? जापानीज बुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये। What the hell? मशीन से ही बात करनी है। वो भी जापानीज, सबटाइटल नहीं होता तो पता भी नहीं चलता। New strand established. Let's go. Nico. डेटा साइंटिस्ट है या एनीमे है? ये डेटा फोटोशॉप एआई कैम, ये स्निकिंग बूट्स, कुछ नए प्रकार की एसएल ड्राइवर है। इसको 93 हो गया अपना रैंक। ये डेटा साइंटिस्ट है। स्किप करो ये।
मेरे को ये 敵と地面 इसका एक्सेंट ही पसंद है. फालतू बमचो जैसा. 最近好きあらばやあはんもぐらあつ बालों में गाजर फंसा है. Great job as always, Sam. I'm guessing you must be pretty tired. Get yourself back to the GHV Magellan and take a break. Oh, and tomorrow seems to be more talkative lately. Maybe the two of you could find time for a chat. Order completed. Well done. थोड़े से शार्पनेस कम कर देंगे. वही सोच रहा था स्टार्टिंग में भी. बात हो रहा. Disengaging weapons restrictions. Take care, Sam. Fragile? What is tomorrow? We didn't have that where I came from. I don't understand what it means. You know what will happen to these buds? इसका एयर कलर वापस चेंज हो They गया. will turn into flowers. In the space of a day, they'll कल वो टार में से निकले ब्लैक हो गया था. वापस ब्लॉन्ड हो गया. Things can't help but change, you see. They can't stay the same forever. But where I came from, nothing ever changed. So does that mean I'm not alive? Listen. You are alive. The person you were yesterday is different from the one you are today, and the one you'll be tomorrow. You're changing. That's what living is. To change and to embrace change. To transform. Is this what my tomorrow will be? Yesterday becomes today, which in turn becomes tomorrow. They're all connected, for better or worse. And death is not the end. Death is not the end. Welcome back, Sam. You should get some rest. All right. Good night.
So that was the esteemed data scientist. It didn't take much convincing to become a part of the chiral network after all, did they? I suppose the appeal of APAS's analytical capabilities was too much to ignore. And they must be quite the fan of pizza, too. The considerable weight of our last delivery did not escape my notice. Just how many pizzas do you think the chef was able to pack into that container? Huh. A suit that prevents its wearer from being recognized by AI cameras. Eyes are the most prominent sensory organ of many life forms. Those of us who specialize in psychology often learn a great deal about them. You see, what the eye and the camera perceive is compared against past experiences and data to yield a conclusion. Perhaps this suit exploits a flaw in how AI cameras perform this function. Which is to say, you shouldn't presume you won't show up on these cameras. But I think it may utilize a form of optical jamming to obfuscate your appearance. In this way, it ensures the system doesn't interpret you as an intruder. You know, Sam, I was just thinking. Those apples Rainey gave us do look tasty, I must say. Such bright, healthy colors. Perfectly ripened in my estimation. How fortunate that we received so many. Oh, reading that one again, are we? It must be quite the page-turner. The HMS Beagle, which was instrumental in Darwin's development of his theory of evolution, eventually came to symbolize adventures and explorers of new worlds. Spaceships in science fiction novels would bear the name, as well as actual ships developed in real life. You know, Sam, when our Australian journey is finally complete, we could ask Charlie to build us our own personal vessel. Yes, we should. Let's do that. It'll be fun. It goes without saying that we'll have to call it the Beagle. Oh, and you must let me be the captain, all right? I won't budge on this. I refuse. I was thinking, I should teach tomorrow a few things. Kita awal ri. I need to do some studying myself. ऐसे सोते हैं?
क्या हुआ? गलत जवाब दी मैंने। मैंने ठीक से पढ़ा ही नहीं। इतना पढ़ा लिखा होता तो गेम थोड़ी ना खेलते। वापिस है। Yeah. I was thinking I should teach Samara a few things, but to do that, I need to do some studying myself. Can you take a look at this? क्या लिखा है? Examine the life cycle of each organism depicted. Select answer that best. लार्वा है एग है पता नहीं। ओके ये सही जवाब था। Have a safe trip, Sam. Later. वो किससे सो रहे थे हवा में उड़ते हुए? I don't wanna. सोने का स्टाइल थोड़ा कैजुअल। Record the old BB board. Okay. आपस में क्या है? फैब्रिकेशन में क्या है? Let's head out. Thank you. पहले पार्ट में वो ऐसे हथकड़ी जैसा था उसका हाथ में, अब ये रिंग दे रखी है जैसे। यहाँ पर पे तो ये वो बैंडिट्स भी है। ये भाई स्टिकी कौन कुछ भी उठा लेता है। मस्त दिखाया है होने से इसकी है क्यों है क्या सीन है।
इसको क्रॉस कर पाए। आई थिंक ये तो इजी पीजी हो जाएगी, काफी कम लेवल है पानी का, ऊपर से पत्थर है तो इजी था उसके ऊपर से निकलना। तो स्लो मोशन सेक्सी है इसकी। स्लो मोशन है, इतना मस्त है ना इसका, बहुत मत पूछो। वहां से भी आ रहा है। ये कितना मस्त एनिमेशन है, झाड़ियों में से होके जा रहा है। Feels so realistic. क्या गुंडा बनेगा। वन मैन आर्मी, इसको खत्म, टाटा गुड बाय। Looks like you have what was requested. All that remains now is to drop it off. लेट्स गो। भाई इसका स्टिकी कैनन खतरनाक है भाई, कहीं से भी चीजें उठा ले। अबे कहाँ पे देना, मदरहुड। ओके इसके लिए ब्रिज क्रॉस करके जाना। ओह शिट, हमारा ध्यान भी नहीं है। ये डेजर्ट एरिया बताए वो एकदम पूरा ऐसे लग रहा है जैसे मार्स पे जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ही है डेजर्ट, पूरा लाल अब लाल लाल है भाई, लाल है। पूरा एरिया लाल है।
ऐसा लग रहा है जैसे मार्स पे चल रहे रोवर लेके। देखना आसपास देखना। एरिया देखना इसकी एंड की का इसके व्यू लग रहा है। ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई एस्ट्रोनॉट है, जैसे मंगल ग्रह पे आके जीवन की खोज कर। ऐसा मास्टरपीस तो है हिडियो कोजिमा ही बना सकता। रेत के वो टेक्सचर देखो है सैंड की, देखो ऐसे पार्टिकल क्वालिटी। ये सीन कितना मस्त लग रहा है। जैसे वॉलपेपर रखा हो इसको। मन तो करे ऐसा पूरा ऐसे चल के जाओ, पूरा ऐसे एरिया एक्सप्लोर करो। क्या एरिया डाल रखे हुए इसमें, डेवलपर की मेहनत तो है। इसकी गाड़ी इतना दूर से उठा लिया इसको। रॉन्ग मेडल। स्टिकी कैनन बहुत काम कर रहा है, कुछ भी उठा लेता। साउंड ट्रैक्स कितना मस्त एकदम चुन चुन के डाल रखे इसमें, एकदम सूदिंग। कोड कहाँ से निकल? This door appears to be locked. You'll need a passcode of some sort to open it. पासवर्ड कहाँ से निकाल? पासवर्ड कहाँ से निकल? इसमें कुछ है पासवर्ड वगैरह ऐसा कुछ?
किसी और जगह से एंट्री है ऐसा कुछ? पासवर्ड किसके बिछोड़े से निकला? You don't know the number, do you? Correct me if I'm wrong, but didn't Charlie specifically tell us to check something before we accepted this order? अच्छा, चार्ली ने कुछ तो बोला था, बट ये मिशन करने में आई थिंक उसने पासवर्ड भी ये सब बताया। वो सब कहाँ से फिर वापस? तो वापिस वो डायलॉग वगैरह सुनना होगा। कितना मस्त लग रहा है। बम चल। इसमें ऐसा कुछ क्लू तो मिल नहीं रहा। कोड कहाँ से निकल रहा है? ऐसा तो नहीं वहाँ पे बीबी कोड था, वहीं पे कुछ कोड वगैरह था। Be sure to read the Motherhood's data bank entry carefully before visiting. देखते हैं, मिलता है तो ठीक, वरना फिर कुछ गेम प्ले में देखते हैं। इसमें तो मदरहुड के बारे में कुछ ऐसा एंट्री है नहीं। मदर की डेटा बैंक, ये डेटा बैंक है, ठीक है। इसमें मदरहुड के बारे में सेम है।
अदर रोड कहीं पे दिख तो नहीं रहा। ये रहा। Chip reveal. अरे ये रहा। Record. Open the door and it's a date of your own birth. Okay. Zero 0702 मिल गया कोड। तेरा भाई जोड़ है। दिमाग तो है यार मेरा। Access granted. That did it, Sam. Thank you. I'll get this cargo processed right away. I'd say this is practically perfect. I had a feeling you were the right porter for the job. We've been waiting eagerly for your arrival. We're ready to join the chiral network. The mother road. डॉक्टर। चलो ये स्टैंड भी एस्टेब्लिश हो गई। म्यूजिक डेटा मिला। फॉर्मवेयर अपडेट हो गया। करंट पोर्टर ग्रेड 95 हो गई। Appreciate your help. Before you go, I have another favor to ask of you. In private, where we won't be overheard. There's a back room just past that terminal. I'll be waiting. Order completed. Well done. What is this? We came here in peace. उसने तो अंदर बोले अबे ये बंदूक तान रहे। सब यहाँ पे टक लेगी। वो तो एक दो प्रेग्नेंट भी। सब यहाँ पे टकले भरे पड़े। It's all right. They don't mean us any harm. चोमू ने बोलना चाहिए था ना इसको। You must be Sam. Thank you. Couldn't have been easy getting here. Folks call me the doctor. Deborah My Wilson. sisters and I don't normally allow men inside, but for patients we make an exception. It's clear you've suffered greatly for this child's sake. Haven't you? May I, Sam? Yeah.
These. They're chiral hands. What the hell? So your BB's passed on. You have dooms then, I take it. I do. And it's given me an unusual gift. I can remove a BB from a still mother's womb without resorting to invasive surgery, and safely place it in a pod with minimal distress to the fetus. Without using any tools whatsoever? So you're a psychic surgeon then? A psychic midwife is what they call me. When I was with Bridges, I used these techniques to remove BBs from their mothers. Sam, you may be suffering from persistent, complex bereavement disorder. Is that why you called me here? To tell me I got issues? Sam, we're the motherhood. The what now? This shelter's a safe space for mothers. Women and children would come here seeking peace. They also came because I could examine still babies. I'd move the fetus to a pod and perform what I would call a transposed screening. I guess that's why they call you doctor. So, are you saying your technique allows you to treat still baby syndrome? A BB pod is functionally no different than an incubator. And I was eager to bring our unborn children into the world. So, I thought I would give this little one a chance. Still baby or no, I was convinced I could bring a fetus to term outside the womb. So I placed him in the pod. And a moment later, his heart started beating. And then, after 3 minutes, it stopped. I tried as quickly as I could to get him back in the womb, but it was too late. The still baby was no longer viable. I'm sorry, Caesar. Over time, I tried to refine the pod tech to find a way to help women and their children. But treatment and life extension are impossible. All I could do was look. Even so, word got around and mothers in need of support started coming here. But unfortunately, not long after, men came knocking too. Men who wanted women. What could I do? I was only a doctor who delivered babies. And nothing more. Luckily, I had strong women around me. Mothers who were willing to stand up and fight for the sake of us all.
But as soon as we decided to take up arms, our man friends only got bolder. If we don't fight back, they'll enslave us. We can't and won't lay down our arms till our safety is guaranteed. इसकी यानी पूरा आर्मर यहाँ पे कर रखे हैं। Shotgun, rifle, grenade launcher. Weapons factory's been pumping them out non-stop. That's why all the locals around here are toting new toys. Yeah, plenty more than new releases in the armory downstairs. पूरी फैक्ट्री खोल रखी है इसने। Sam, we want you to shut down their operation and halt the spread of weapons. Stop them, please. Please. Prior to proceeding, we'll need to confirm the precise location of the factory. Let's make our way back to the DHV Magellan, Sam. Sam, wait. Yeah. इसकी वेणी हाथ घुसड़ दिया है। हैं? There. बुलेट है। All finished. बुलेट निकाल दिया। बुलेट ही थी ना, क्या था ये प्लास्टिक निकल गया था। Sam, this is Tarman. We've got an emergency on our hands here. I'm afraid the DHV Magellan is out of action. We can't move an inch. A cursory inspection confirmed that some critical parts of the propulsion system have become clogged up with tar. Our usual decontamination methods won't cut it. We'll need a special tar dissolvent to clear out the blockage. The F2 South Distribution Centre was kind enough to source some for us. I'd like you to pick up the order on site, collect the cargo and bring it back to the ship. Meanwhile, we'll be doing everything we can to keep ourselves from sinking further into the tar, as well as gathering information on the weapons factory. Don't let us down, Sam. नहीं बस 4000 मीटर जाना है। F2 में जाना। अबे इसका वो मेगलन शिप का लोचा हो गया कुछ तो। वो ट्रांसपोर्ट ऐसे नहीं कर सकते फर्स्ट ट्रैवल। ऐसे डिस्टेंस कर लिया नहीं। Commencing route creation. Delivery route finalized. पहले तो यहाँ से जो होके आए थे डेटा साइंटिस्ट, वो सब होके आना। वैली से होके Commencing route creation. Delivery route एग्जैक्ट रूट तो मैं नहीं फॉलो करूँगा, बस ये जैसे अंदाज़ा लगा तो पता चले कहाँ जाएंगे। लोकल पोर्टर्स जा रहे हैं। Hey Sam, a
Have you thought of... about using transponders? Might make your life easier. वैसे ये सब नेचर बताया इन लोगों ने। काफी लंबी जर्नी होने वाली। Sam, there's an animal that appears to be on its own. This could be a good opportunity to assist the shelter with their preservation initiative. एनिमल कैसे मर गई? वो नीचे आ गया, मैं क्या करूं? जानबूझ के थोड़ी ना मारा। सहारा के डेजर्ट में आ गए सभी लोग। इसकी माँ का What the hell? भाई ये लैंड माइन्स का खतरनाक सिस्टम है यार। फट के हाथ में आ गई, पूरा ट्रक डैमेज हो गई। तो आराम से एंजॉय कर रहा था राइड को, पता नहीं कैसे लैंडमाइन फूट गई। ओ भाई पूरा डेजर्ट एरिया है। अरे मैं भी चौंक गया हूँ। ये डेजर्ट एरिया से तो होके जा सकते थे। ये देखो यहाँ से मैं घूम के गया बेकार में। ये डेजर्ट से ओके यहाँ से तो हो सकते थे, पीछे ही तो था मदर रोड पे। हाँ मगर यहाँ से है, नदी से होके गए भाई।
पूरा डेजर्ट कनेक्टेड तो है। क्या पोर्टर बनूंगा मैं भाई फालतू में। वहाँ यहाँ पे गया, वहाँ से यहाँ पे आया, नदी क्रॉस की, ऊपर से डैमेज खाया वो अलग। यहाँ से सीधा सीधा आना था रूट लेके। चौंकिया देख भी नहीं रहा ठीक से। तो मैं इतना घूम के यहीं से सीधा तो था मदर रूट से। मदर रूट से यहाँ का रूट लेना। कोई नहीं चलो चलो यहाँ पर तो मैं रूट सेट कर दूँ। Commencing route creation. Delivery route. कसम से क्या पोर्टर बनूंगा मैं भाई। मदर रूट से मैं डायरेक्ट ये यहाँ आता तो ये जर्नी भी एंजॉय कर पाता है रेगिस्तान की। फालतू में वहाँ बम खाने गए हैं। यहाँ पर भी रोड बना सकते हैं सब स्ट्रक्चर बनाने का। बस सामान चाहिए। ओ इतने सारे कार्य क्रिस्टल्स। अरे इसकी बैटरी नहीं है। मजा आ गया भाई। ये सारे कार्य क्रिस्टल्स ऐसा लगता है जैसे इजिप्ट में आ गई। स्टार कितने सेक्सी लग रहे हैं। चलो अभी यहाँ से पर हार्टमैन के लैब और समुंदर।
ये देखा बैटरी इसके कम है तो इसके लाइट का भी कलर चेंज हो रहा है, येलो हो गया। एफसीसी पड़ा है मेरे पास। Okay. बिल्ड करने के लिए टूल्स तो है नहीं। ठीक है, एफसीसी एक अंदर पड़ा है। पीसीसी सॉरी, मैं एफसीसी बोलता हूँ हर बार। outside the current network. अरे यार ओके तो फिर काम करता हूँ। आर्टमैन की लैब में जाता हूँ, इसको रिपेयर भी तो करना। रिपेयर हो जाएगा तो अपने आप को बैटरी भी चार्ज हो जाएगी। यहाँ पर जनरेटर लगाने की जरूरत नहीं। Process your orders and request. हाँ भाई फट गया था ना इसको, लैंड माइन में काफी डैमेज हो गया था। Patched up and good to go. लेट्स गो। तेरा उल्टा कहाँ जा रहा हूँ? चलो अभी यहाँ से यहाँ से स्ट्रेट नीचे जाना है, फिर राइट लेके सीधे चलते जाना है। भाई कुछ भी उठा रहे हो भाई। रबड़ इनको मार तो दिया था, वापस आ जाते। कोई नहीं, यहाँ से निकल जाते और हेडलाइट बंद कर देते। टाइम वेस्ट नहीं करना उनको मारने के चक्कर में, उनको तो कोई काम धंधा नहीं है। ऊपर से फिर ये ट्रक को भी डैमेज करेगा, अभी जैसे रिपेयर कर रहा है। इस एरिया में भी तो है बैंडिट्स।
काम कर दे एकदम भगा के ले जा तो बेकार में इनका मुंह नहीं लगना। हाँ मेटल से उठा लिए पट्टे से। स्टिकी के ना बहुत काम कर रहा है, काफी सारी चीजें उठा। चलो अभी तो 1000 मीटर भी नहीं है। बातों मैं 3000 मीटर गया, कम हो गया पता भी नहीं चला। बारिश का सीन इसमें खतरनाक दे रखा है, काफी रियलिस्टिक लगता है। हो रहा सामने साउथ सेंट्रल। इसमें नदी के इस तरफ वैसे 2 नदियाँ क्रॉस करनी पड़ेगी। सीन कितना एकदम है इसकी माँ पत्थर पे बस की सीन देखने का चक्कर दिखा ही नहीं, एकदम सिनेमैटिक है जैसे कोई मूवी देख रहे हो। Rising, we mustn't underestimate the potential risks here. यहाँ पे तो डॉन ली है ना कोरियन एक्टर। रिपेयर कर लेते हैं ताकि बैटरी भी रिचार्ज हो जाए। As good as new to me. देखते हैं क्या ऑर्डर है। अच्छा इसका होगा लॉस कार्गो भी था। चलो ये भी काम हो गया साथ साथ। Still out working hard after dark, I see. Appreciate the dedication. One moment while I check the orders. You've done a mountain of orders for us. We sure appreciate the hard work. Thank you, thank you. Thank you for appreciation. Now displaying your current porter grade. ये तो हमारे रोज का। Apologies for making your come visit so late. Be careful out there, okay? Don't leave. Korean actor. Well done.
चलो अभी इसका टू द डीएच निकल वापस इसको वहाँ पे 4000 मीटर वापस लेके जाना। गैराज में क्या नहीं है। अच्छा डिटेल्स रही नहीं को Order accepted. Thank you. वापस वही रूट फॉलो करेंगे। वहाँ पे बारिश का सीन देखो, हाँ मस्त एकदम वॉल्यूमेट्रिक फॉग दिख रहा है। ग्राफिक्स में तो कोई कसर नहीं छोड़ी इन लोगों, छोटी से छोटी डिटेल्स दे रखे। देख रहा हूँ बारिश की वजह से ऐसे वो धुंध वगैरह ऐसे हो जाती है वो एरिया में से, फॉग इफेक्ट आ जाता है। दूर से ऐसे ही नज़ारा देखने को मिलता है बारिश का। वहाँ पे शायद बीटी एरिया भी है। थिंक सुबह होने को है। वहाँ पे देखो ब्लैक ब्लैक निकल रहा है बीटी एरिया भी। कभी इतनी बारिश हो रही। वैसे ऊपर है, नोटिस नहीं करे, नीचे से ही जाना है ना। आए भी तो नीचे से एकदम एक की नज़र पड़ गई। पहुंचेगा तब तक तो निकल जाएगा। अंदर से मेटल उठा लिया वो तो। एकदम खोपचे में रखे थे उसको भी खींच लिया इसने। एक ने नोटिस कर लिया। तो बारिश की बूंदे इसमें कितनी रियलिस्टिक दिखाई। स्क्रीन के ऊपर स्प्लैशेस आते हैं। प्लस जो छींटे दिख रहे हैं ऐसे बारिश के, वो भी ऐसे ट्रांसपेरेंसी मस्त दिखेगी। कनेक्टेड टू कायरल नेटवर्क।
यहाँ पर भी बैंडेड्स हैं। हाँ तो यहाँ से निकलता हूँ, यहाँ से ऊपर से होकर निकल जाए, फालतू में उनको नोटिस नहीं होना। इससे भी शॉर्टकट है तो फिर वहाँ से घूम के गिर जाए। सेम्स बैटरी फुली चार्ज। सही ढलान पे जा रहा हूँ, ये चढ़ने में थोड़ा दिक्कत करेगा ये, काफी एकदम एंगल एकदम काइंड ऑफ स्ट्रेट जैसे ही। ये देखो कहीं से भी उठा ले रहा। तो इसका ये सुबह का जो सीन होता ना, सेक्सी दिखा है जैसे, गुलाबी गुलाबी पूरा। मस्त दिखता है। स्पाइडरमैन की तरह कुछ भी उठा रहे हैं। ये देखो कैंगरू लेफ्ट साइड पे अपना ठीक जगह पे खड़ा था, ठीक है, जानबूझ के ऐसे बीच में मरने आया। मैं ब्रेक मारू इसके पहले तो बीच में आ गई, फिर बोलते ड्राइवर की गलती। बेचारे ऐसे सलमान भाई को भी ऐसे ही बदनाम कर रखे। तुमने देखा ना गाइस वो कैसे कैंगरू ऐसे बीच में है, मैं ब्रेक पे मैंने मारा, ठीक से वो अपनी जगह पे ही खड़ा था आराम से, पता नहीं उसको क्या चूल दी ऐसा, वहाँ पे मरवाने आ गए। क्या मस्त रेगिस्तान बताया हुए। अच्छा इस तरफ जाना, आधा घंटा तो इसमें ही चला गया। पैटर्न कितने सेक्सी बताए हुए, पूरा एकदम असली रेगिस्तान जैसा फील। सामने से लेंस फ्लेयर आ रहा है, धूप आ रही है, धूप। Lou is enjoying ride. लू को राइड पसंद आ रही है, इसको तो क्या ही है बैठे रहने, हमारे फट के हाथ में आ जाती। इसकी बैटरी खत्म होने है। ओके अभी भी काफी दूर है, बैटरी इसकी खत्म होने को है, मेरे को लग नहीं रहा है 800 मीटर तक पहुंच पाए। इसकी माँ कौन सा कार्य नेटवर्क, अच्छा यहाँ पे तो हाँ हमने ये कनेक्ट कर दिया ना मदरबोर्ड को, इसलिए यहाँ पर तो कायरल नेटवर्क है।
चलो सही है, तो जनरेटर बना देगी। Surpass our own capabilities before long. To learn is to grow. Watch her grow so quickly. इसकी माँ का स्टोम है भाई। इसकी माँ हमारे ऊपर बिजली गिरी। स्टार्टिंग में भी ये सीन था ना, गेम स्टार्ट किया था खेलना तभी। अबे ये कहाँ आ गया भाई? स्टोम में दिख भी नहीं रहा, चट्टान में आ गया एकदम ऊपर। अच्छा ऐसे घूम के जाना था, स्टोम में पता ही नहीं चला। थोड़ा वेट करना पड़ेगा। स्टॉर्म चला जाएगा क्या है? इसकी बैटरी भी खत्म होने को है, खत्म ही है ऑलमोस्ट। अबे ये बनाना पड़ेगा। इमरजेंसी में बनाना पड़ेगा। खतरनाक स्टोम है। क्या ही एक्सपीरियंस है। ओके अभी क्लियर होगी। ओके उतनी जगह में था, चला गया क्या है? पूरा एकदम रेत से भरे भरे। नहीं नहीं है। ओके उतनी जगह में है स्टॉर्म। मुझे लगा खत्म हो गया इस तरफ भी। डर के आ गई चीत है इसको। क्या ही खतरनाक स्टॉर्म था ये, फटके चार हो गए। देखो तो से कितना ऊंचा है इसकी मौत। भैया पूरा टार से भरा पड़ा है। क्या तकनीकी खराबी आ गई इसमें। पूरा एकदम है धूल धूल हो गया। ऐसे खतरनाक स्टॉर्म से बच के ऐसे स्टॉर्म में जनरेटर भी लगाया मैंने। कोई नहीं, ये तो हमारा काम। I'm tied up with ship repairs at the moment. Can't afford to risk contaminating this work site either. Anyway, let me check your cargo. On you, Sam. This cargo looks to be in perfect condition. It's no wonder your client speaks so highly of your work.
Cheers for that, Sam. This'll take care of that blockage, no worries. We'll get started right away. We can handle the blockage. It's fine. I'd rather you get some sleep. उससे blockage होगी. Tackle your next order. By the time you wake up, we'll probably be finished anyway. Enjoy your rest. कुछ तो ऐसा खतरनाक लोचा हो गया एकदम, वो फ्लड हो गया पूरा टावर का। काफी थक गए भाई, पूरी रात निकलती है वहां से। 4000 मीटर गए, 4000 मीटर वापस आए। ऊपर से वो बैंडिट्स को भी, एनिमीज को भी चकमा देके। खतरनाक तो स्टॉर्म वाला एरिया था भाई। बारिश तो फिर भी ठीक है, चलो। स्टॉर्म वाला एरिया कितना खतरनाक है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ पे गिरते गिरते बच गया था मैं। चलो ये रिपेयर हो गया। नेक्स्ट मिशन पे तो सपोर्ट टेकर के आता है। Hi, Sam. Each time we take the DHV Magellan into the currents, the level of tar pollution on board increases. Which is why everyone has to pitch in to clean the ship after every trip. In spite of that, we still find ourselves stymied by nasty blockages like this one. Tarman broke 3 mops attempting to dislodge a particularly stubborn wad before throwing up his hands in despair. Although he failed in that epic struggle, I can only respect his dedication. Come to think of it, the doctor's talents were a sight to behold. A psychic midwife. I've never had the opportunity to watch one at work before. How many children has she held in those hands of hers, I wonder? I expect she knows a great deal about BB units as well. थोड़े से पेट पूजा। अभी एप्पल वहीं पे देखो, कच्चा एप्पल, वो ग्रीन एप्पल था, अभी पक गए, रेड होने लगा।
क्या हो रही है बुक में कुछ पढ़ने को नहीं खत्म हो गई चलो देखते हैं अभी तो Sam, your next order is a little complicated, if I'm being honest. I'll brief you on the particulars while you review the relevant information. Go ahead and accept this main order on the terminal. Yeah, extract data from weapons and destroy them. Bring back data to the PHP. Okay, Sam. This next order calls for you to infiltrate a weapons factory and disable the weapon fabricators you find within. The factory is located in this area. Although it's outside the chiral network, they have fabricators capable of producing advanced weaponry. We don't know what kind of security they have on site, so make sure you're prepared to face anything and everything. There's also a vital piece of equipment you'll need to take with you. We'll get it ready once you've finalized your route. कोई जनरेटर है Commencing route creation. Delivery route finalized. The Ring Terminal expansion device is designed to support the Ring Terminal's hacking capabilities. The factory where the weapon fabricators are located is outside the bounds of the chiral network, and APAS has determined that you won't be able to hack into them with your Ring Terminal alone. But with this device in your possession, all you need to do is access the fabricator terminal. It'll be hacked and rendered inoperable before you know it. Once the terminal is out of action, they'll have no way of getting the fabricators up and running. And they'll likely conclude it's not worth the hassle to try and make weapons here again. Hacking the weapon fabricator terminal will also simultaneously extract any data stored in its drive. So be sure to bring the expansion device back to the Magellan once the fabricators are disabled. You'll need to submit it to the ship's delivery terminal to complete the order. We'll conduct a full analysis of the data you bring us. Oh, and a word of warning. This device contains unique components that can't be reproduced with a chiral printer. So whatever you do, don't break it. Get the job done, Sam. Okay. Let's head out. इतना डिस्टेंस करने के बदले डायरेक्ट वहीं पे चलता ना 8 मिनट के लिए नज़दीक है वहाँ से इजी पीसी ये कितना दूर होता है कहाँ से है मदरवुड से Commencing route creation. Delivery route finalized. वो डिलीवरी अच्छा अभी तो डिस्टेंस देखना
हाँ ये देखो 1675 ओके 1675 मीटर होता है और अभी यहाँ से 635 मीटर हो रहा है 8 मिनट की लेट से मतलब ऑलमोस्ट हमने 1000 मीटर जितना हमने टाइम बचा लिया 1000 मीटर तक अपने बीच में स्टॉर्म भी आता शायद वो टाइम भी बच गया Sam, you forgot to grab the ring terminal. इसका जितना भी लॉस कार्गो है सब दे देते हैं Oh, excuse me. अच्छा ये आंटी थी अंदर Nice to meet you. लोंडे जैसी You might remember my hand, at least. How's a mute? Hard man and my. Allow me. Well, look at what you brought me. लोंडे जैसी शक्ल है I've made great strides in my work. एक्स्ट्रा बैटरी लेवल 2 And want to give you this data as thanks. I am increasing the amount of materials. Now display your current porter grade. The schematic, it boasts. It's. I think, you know, I can hear this as I know. First of all, in my particular, the muscles. That's right. I'm sorry. Order completed. Well done. इसका ऑर्डर भी हो गया हमारा टाइम भी वैसे बच गया इसकी वैन की क्या एंगल है खतरनाक देखा यहाँ से फर्स्ट चल गया तो 1000 मीटर का टाइम भी बच गया वैसे इसको लॉस कार्गो भी हमने दे दिया दोनों काम हो गए इसको बोलते दिमाग इसकी माँ का यहाँ पर तो स्टॉर्म ही स्टॉर्म है पूरा स्टॉर्म खत्म ही नहीं होता क्या पर एनिमीज भी है ये तो वही रोबोट मेरे मशीन गन काम क्यों नहीं करे लेट्स गो टक 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 इसको मार मार के शॉटगन कलेक्ट कर रहे हैं मैं सुपरमैन सैलमोन का फैन मैं मारा जा रहा हूँ और स्टिकी कैनन उसके गन कलेक्ट करे जा रहा है What a combination. एक और बच गई नहीं अभी भी 2-3 है
अच्छा वहां से नहीं जाना, यहाँ से अंदर जाता। काम करता हूँ, पार्क कर रही है। मजा आ गया भाई। अच्छा एक और है अंदर। स्लो मोशन गजब का है भाई इसमें। Sam, you forgot to grab the ring terminal expansion device. अच्छा अच्छा ओके ओके। अच्छा वो इसने बोल दिया। मेन आइटम ही रह गया। वहाँ से जाना। सेक्सी स्लो मोशन इसमें। The door won't open. Maybe it locks when enemies are nearby. You can अच्छा try to lure सबको them पहले away मारना or पड़ेगा। take them all out. Your call. एक और बार है। फिर से बॉडी शू। लेट्स गो। मजा आ गई। सबको एक साथ फेल दिए। ये क्या है जनरेटर? ठीक है यहाँ पे एनालाइज हो रहे थे वेपन्स हो रहे। ओह काफी सारे वेपन है पूरे फैक्ट्री है यहाँ। Okay, we're here. Use your ring terminal expansion device to hack into the fabricator terminal. हे इस डब्बे को हैक करना मस्त मिशन है। Fabricators are exposed. We've extracted चलो ये फैब्रिकेटर थे, data as well. इनको डिस्ट्रॉय कर दी। And return to the DHV Magellan. Don't forget to bring the ring terminal expansion device with you. क्या हुआ? साथ में ही है ना रिंग टर्मिनल। When did you start getting यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है भाई। कुछ तो खतरनाक सीन। ओके एक सौ वापिस आए। इसको चैन नहीं है, कई बार भी उंगली करने आ जाता। आग लगा दी भाई अनु मलिक की नजर सोलर। पता है एकदम सिनेमा मूवी जैसा फीलिंग है। Let that yawn out. There's no pretending. I will hold you and protect you. So let love warm you till the morning. भैया गिटार बजेगा। फाइनली मास्क ने ट्रॉय बेकर। Hey brother. क्या मेकअप किया भाई इसने? Hell no. Yeah, I figured you'd pay this place a visit.
seeing as how I've been distributing the जोकर की कॉपी कर रहे हैं। fine factory all over the continent. Guns and violence, the whole damn world could be yours. एकदम अजीब लग रहा है। Same as it ever was. Oh. Looks like you decided to trade in that rope for a stick this go round. Well, I suppose even a porter has to pull the trigger from time to time. Oh, what about you? Hey, buddy. Are you just another soulless little husk, huh? Let go of me! Oh. Pathetic guitarist. Where's the rest of your band? इसमें क्या है भाई हाथ धो के इसके पीछे पड़ा है लोग Ain't that something? स्टार्टिंग से Huh? Was it you that killed Lou? You still don't know, do you? Sam the man in the dark about everything. The fuck do you know about my kid? If you want answers, you're gonna have to find them yourself. But the ones you do find, that pain you nurse will only get worse. Now, I gotta say, I'm not a big fan of that fancy boat your friends brought along, so before they show up, how about I get a little taste of that endless agony? Something special just for you. Look at that rope you like so much. कहाँ से निकाला इस This here, my guts. Eh? And they'll grow tighter over time. You best Say believe guts? they'll pop your head clean off. But you are repatriate, meaning you'll just keep coming back. Only for my boys here to keep doing their thing over. Your ऐसा cinematic बनाया है game So you'll just die and die and keep on dying for all eternity. Sam! Yeah. कहाँ घुस रही अच्छा Stay dead. गला But घोंट hey, रहा है locking you in a cycle of endless suffering, well, that's good too. So let's let the glorious game over loop begin. The fuck? ये कौन है हैं गिटार बजा के बाद तलवार वालों को तो हमने मारा था कि नहीं वो उसने तुमोरो को ढूंढने गए थे तभी वहां पे थे ये तलवार वाले मुझे लगा इनके साथ है हिग्स के साथ कलर सेम है दोनों का वो कॉस्ट्यूम का ऑरेंज ऑरेंज Yeah, Big Red. Just you and me dance, huh? तो मूवी जैसा बनाया हुआ है हाथ कट गया इसके ओ पैर भी काट दिया बहुत बकचोदी कर रहा था Son of a bitch, just like me. ये कौन है इसको बचाना Sorry, Sam. We'll have to have our fun another time.
पट के हाथ में आ गया इसको। Who the hell are you? हाँ ये कौन है पता तो चलो। हमारी साइड है क्या? बेबी जैसा कि म्यूजिक। इसकी वैन है ये। टेलीपोर्ट मार के भाई। मस्त स्टाइल था उसका टेलीपोर्ट करने का। That red behemoth anyway. The way it wielded that sword was almost reminiscent of a samurai. A friend of yours? Samurai. In any event, I think it's time we left this place. Come on, Sam. Let's get going and return the ring terminal expansion device to the DHV Magellan. ये रहा ये लोगो था ना उसके वो कोफिन के ऊपर तो एब्सोल्यूट सिनेमा जैसा गेम बनाया है भाई। ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई ऐसा गेम खेल रहे हो, कोई ऐसा मूवी देख रहे हो, किसी का गेम प्ले देख रहे हो, ऐसा फील होता है। बटरी स्मूथ अभी तक थोड़ा सा भी स्टटर नहीं हुआ गेम ना। कितनी सारे इसमें इफेक्ट वगैरह, मक्खन चल रहा है गेम मेरा। ये देखो अभी यहाँ पे फाइट की, अभी DHV मैगलन में बता रहा है ठीक है वापस जाने का। मान लो कि अभी मदर रोड पे ही होता मन, यहाँ पे फेस्टिवल नहीं किया होता। कितना 496 क्या करो उसको यहाँ पे बुला लूं डेटा साइंटिस्ट के पास। या फिर ऊपर जाएगा ये। ये इजी रहेगा। वो ऊपर जाना उबड़ खाबड़, इससे अच्छा ही है बस ये रेगिस्तान में चलाते जाओ। मस्त मिशन था भाई ये ऐसे। बीच में एक सा है कराटे वराटे दिखाए अपने मूव्स। तो बात है ये मतलब गेम कितना ऑप्टिमाइज रखा है। थोड़ा सा ऐसे बीच में वो ट्रांजिशन ऐसे हुआ तो स्टटर नहीं हुआ ऐसे। इतना सारा वो एक्शन वगैरह था। जरा सा भी गेम लेग नहीं हुआ। बात पहुंच भी गई। अभी तक तो वहां पे मैं पहाड़ पे पहुंचा हूँ। डिस्ट्रॉय कर दिया हमने। Terminal expansion device. Let's go. Sexy mission though. Hey Sam, glad you're okay. I'll check your order status right away. That was some incredible fighting. I knew you had it in you. Action से भरपूर। I'm glad we could confirm that Higgs was involved. Though I still don't understand how he escaped the beach. The Ghost Mech forces are definitely under his control.
And Higgs is determined to spread weapons to every corner of Australia. The information we retrieved from the device you brought back to us only serves to confirm this. We now know for a fact that the weapons popping up in this region can all be traced back to that factory. But that's not all we've determined. We've also learned about a new type of fabricator, one that wasn't present at the weapons factory. It's not clear where they're being used or what they're producing, but this likely means there may be another factory out there. We'll look into it. Great work, Sam. That factory won't be capable of producing weapons ever again. The Motherhood should rest a little bit easier with that knowledge. Higgs remains a concern, however. It is indeed possible he has another factory elsewhere in the continent. It seems we'll need to proceed with greater caution in the days and weeks ahead. Upgrading the Magellan may also be worth considering. As for you, Sam, you need only to continue expanding the network. For now, Sam, you should return to your private room and get some rest. You made a real difference today. ओके अभी 9A कर लेते हैं। बहुत गंदे हो गए, एक्शन हो गया, खून खून हो गया। ये मिशन कुछ मजा आया, स्टार्टिंग से थोड़ा ऐसे ठंडा लग रहा था, तो कुछ एक्शन नहीं था, बस वो हार्टमैन से मिले, 2-3 ऐसे ऑर्डर थे, पिज्जा देने गए, मदर रोड को मिले हमें। इसका इतना कुछ खास नहीं था। लास्ट में एक्शन वाला मिशन सही था। Looks like clear skies. Let the sun shine tomorrow. It's a Japanese game to predict the weather. I learned it as a kid. This is rainy, cloudy. कटसीन के बाद स्ट्रीम बंद ही कर देते। A charm to ward off evil spirits. To help keep tomorrow safe. ये रेनी सबको जिंदा कर देती है, रोज जिसको भी टच करती है वो मुर्दा हो जाता है, खत्म। क्या है कॉम्बिनेशन। Hope it's right. इसका एयर क्वालिटी बहुत ही अजीब लग रहा है। इसका ठीक ठाक है, ये जापानीज का रेनी। But deep down in my heart, it's really sunny. Always. इसका थोड़ा Okay, your turn. खुरदुरा टेक्सचर। Let's do this. 明日天気になれ。क्या करना चाहते हैं? There. Now it'll be sunny. अच्छा ओके, वो ऐसे शूज ऐसे उल्टा नहीं गिरना, सीधा ही गिरना चाहिए, वो फ्लिप द बोतल के जैसे। Bye, Sam. Bye. ये दोनों ऐसे साथ में घूमते थे। ऐसे ट्राई Whatever. तो अपने पहले वो लेजिस को तो लूज कर, ऐसे टाइट बांध रखे। लास्ट मिशन बढ़िया था भाई, वो मजा आया। स्टार्टिंग में वो ठंडा था ऐसे, आज का पार्ट ऐसे स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसे बोरिंग जैसा। लास्ट में एक्स वाला पार्ट मजा आ गया, एक्शन से भरपूर एकदम, और एकदम एब्सोल्यूट सिनेमा जैसा। यार ऐसे ही खून से लथपथ ऐसे सो जाता है, ये थोड़ा रियलिस्टिक नहीं। The neck injury you suffered during your altercation with Higgs appears to have healed. You know, I've been thinking about what he said at West Fort Knot. He claimed that extinction wasn't his creed, that he wanted to build a world where fear and violence are king. I can only assume that at present he lacks the means to set the last Stranding in motion. So instead, he settled for trying to pit people against one another so they can tear the world apart for him. The weapons factory was just a means to that end.
All the more reason why we need to rely upon the rope that is the chiral network to bring the whole continent together. But that's not all he said, of course. He wanted to get under your skin with those comments about Loom. To get his revenge by inflicting as much pain and suffering as possible on the undying repatriate. Personally, I think you should try to put it out of your mind. Focus on finishing this journey, and in doing so, finding the closure you need. That's one of the reasons we took to the road, after all. That and finishing the network to bring forth a new plate gate. Let's carry on, Sam. One step at a time. Sam, Charlie here. Another assignment has been registered in the system. You can pick up this main order by accessing the Motherhood's delivery terminal. मदरहुड का काम करना है, उसके पहले थोड़ा क्लीन हो जाए। Bye, Sam. ये दोनों भाई साथ में ही रहते हैं, दोनों छोटी बच्ची। वो तो छोटी बच्ची इतनी नहीं है, वो क्या अरे नहीं जापानीज, इसके तो पेट में बच्चा है। ये ऐसे ना दो कि ना काइलर क्रिस्टल भी मिल जाता, क्रिस्टल्स भी जमा हो जाए, क्लीनिंग भी हो जाए। इस टाइप के कीड़े भाई समझ में नहीं आता, भूख मिटा देते हैं एकदम। इलेक्ट्रोब्लेड या ब्लेड ऐसा कुछ नाम है कीड़ों का। ओके चलो यहीं तक रखते हैं आज का पराजित कार्यक्रम। कर लेते हैं सेव। ऑर्डर नंबर 28 के 6 ऑर्डर कंप्लीट किए। अरे टाइटल स्क्रीन नहीं ट्वीट करना था। ओके Okay, so that's it for today, guys. Thanks for joining. Don't forget to like and subscribe if you are new to the channel, and make sure to follow me on Instagram too. See you in the next stream. Till then, khatam, tata, bye bye. Peace out.